Assalamu alaikum. Hello and welcome to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about computer science grade 9 and currently we are discussing unit number 1 short lecture notes. Here is part E. So, if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe as well. And if you have any suggestions or any queries related to lectures, then you can do let me know in comments, okay? So, let's start. Topic is modes of network communication. Here are some questions, important questions along with this topic. So, question number one is, what are the different modes of data communication? How does simplex communication work and what are its advantages? What is half-duplex communication and how is it different from simplex? In what situations which would each mode of communication be most useful? Okay, so modes of data communication include simplex, half duplex and full duplex. Simplex communication मोड जो है उसमें जो डेटा का फ्लो होता है इट्स ओनली इन वन डायरेक्शन ओके डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है जैसे कि अगर हम कीबोर्ड की बात करें इट्स सेंडिंग इनपुट टू अ कंप्यूटर विच इज़ यूजफुल फॉर सिचुएशंस वेयर फीडबैक इज़ नॉट नीडेड ओके और अगर हम बात करें टेलीविज़न रिमोट की Alright, so if we talk about half duplex communication, तो इसमें जो डेटा का फ्लो है वो दोनों डायरेक्शंस में होता है बट नॉट एट द सेम टाइम ओके similar to a walkie talkie where one person talks while the other listens okay and in full duplex transmission data is traveling in both directions simultaneously जैसे कि हम अगर बात करें टेलीफोन कन्वर्सेशन की तो दोनों जो लोग हैं वो सेम टाइम पे सुन भी सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ठीक है Simplex mode is simple and efficient for one-way communication. Half duplex is effective for limited two-way interactions and full duplex is best for real-time conversations and interactive applications. Okay. Right, so next topic is communication devices. Question number one is, what are communication devices and why are they important in networking? What is the role of a hub in a network? How does a switch differ from hub? What functions does a router perform in a network? What is a gateway and how does it connect different networks? Alright, communication devices basically essential है नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए ताकि कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सके या दूसरे डिवाइसेस को ताकि उनमें इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली शेयर किया जा सके ठीक है हब बेसिकली जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है नेटवर्क में ठीक है बट इसको जो है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कंसीडर किया जाता है वो इसलिए कि हब जो है वो डेटा जो इसकी तरफ आता है ये तमाम डिवाइसेस को जो है नेटवर्क में सेंड करता है और इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ होती है ठीक है स्विच इज़ स्मार्टर देन अ हब बट बिकॉज इट ओनली सेंड्स डेटा टू द स्पेसिफिक डिवाइस स्विच को इसलिए इंटेलिजेंट जो डिवाइस कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये जो डेटा पैकेट है सिर्फ उसी नेटवर्क या डिवाइस की तरफ शेयर करती है जिसके लिए जिसका मतलब जिसके लिए इसको कहा जाए रदर दिन के तमाम नेटवर्क में ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर दे ठीक है राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर एंड डायरेक्ट्स डेटा बिटवीन देम like connecting your home network to the internet. Gateway acts as a gate between two different networks, allowing them to communicate even if they use different protocols. Okay, like अगर uh, जो एक नेटवर्क है अगर वो एफ टी पी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है दूसरा अगर टी सी पी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है तो बेसिकली गेटवे के थ्रू या एस एम टी पी है या कोई भी और दूसरा प्रोटोकॉल है तो बेसिकली जो गेटवे है इन एज अ जो है वो गेट काम करता है इन दोनों नेटवर्क्स को डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को जो है वो कनेक्ट करने में ठीक है वायरलेस नेक्स्ट टॉपिक इज़ वायरलेस नेटवर्क्स Question number one is, what are wireless networks and why are they important? How does Bluetooth work and what are its common uses? What is Wi-Fi and how does it differ from Bluetooth? How do cellular networks provide mobile communication? What role do satellite network play in global communication? Alright, so wireless networks basically allow devices to connect and communicate without any physical medium. Okay,
ब्लूटूथ बेसिकली शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि जैसे कि हम हेडफ़ोन की बात कर लें या स्मार्टफ़ोन्स की बात कर लें, इजीली हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। या हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपने सिस्टम में ब्लूटूथ के थ्रू सेंड या रिसीव कर सकते हैं फ़ाइल्स को ईज़िली। वाईफ़ाई इज़ वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, यहाँ जो सबसे बेस्ट पार्ट है इन नोट्स का, बेसिकली यहाँ से आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव भी ईज़िली कवर हो रहा है, ठीक है। And your short response question answers and your long question answers as well, okay. So Wi-Fi basically it provides a wireless connection to the internet, like homes or schools, and offer faster speeds and greater range compared to Bluetooth. Cellular networks enable mobile communication by using a network of towers to connect phones and devices over long distances. Satellite networks use satellites orbiting the Earth to provide communication in remote areas where other technologies might not work. वायरलेस नेटवर्क्स की जो एडवांटेजेस हैं वो हैं, बेसिकली a wireless network allows users to connect to the internet and communicate without needing cable, यानी कि आप conveniently इनको यूज़ कर सकते हैं। They are portable. Portable means के movable. You can easily carry them as well, okay. They cover large areas allowing many devices to connect at once. Disadvantages ये हैं कि basically wireless networks are not more secure than wide network, okay. Signals can be weaker and less reliable than wired connections, especially in crowded areas or when obstacles block the signal. Wireless networks can be more in danger to security issues, making it easier for unauthorized users to access them. Alright, so that was all about part 5 of short lecture notes of unit number 1. And if you have any query, you can do let me know in comments. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe as well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।